Hello everyone, all 10th OAV and DAV student, including Nihar, Ansuman, everybody. तो मैंने मो रिफ्लेक्शन कंप्लीट करछि कर सारछि ऑलरेडी तोर कार्टेशियन प्लेन रे डाउट थिला एक्चुअली आई एम आउट ऑफ स्टेट नाउ तो सेतिले हम तुम केवल एटा अपलोड कर देथि YouTube रे बाकी तुम रिमेनिंग क्लासेस कर दे कार्टेशियन प्लेन मिरर रो फॉर्मूला कोन थिला 1 by f equal to 1 by v plus 1 by v. V indicates image distance where u indicates object distance. For example, Cartesian plane तो मैं नाइन को x axis y axis x dash y dash. For example, this is your Cartesian plane. तो right को होच कौन positive ये होची x, this is your x dash, this is y, this is y dash. x dash this is ठीक है ना. तो फर्स्ट quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3, quadrant 4. फर्स्ट quadrant रे x positive and y positive. सेकंड quadrant रे x negative, y positive. थर्ड quadrant रे both are negative. ये सब जगह ऑलरेडी मैं मेंशन कर सारछि क्लास रे. फोर्थ quadrant रे कोन होछि x होछि पॉजिटिव, y होछि नेगेटिव. सेम थिंग ए कार्टेशियन प्लेन को रिप्रेजेंट करो मिरर के साथ. बोथ प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर. ठीक है ना. प्लेन, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर. प्लेन, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्केव मिरर, दिस इज योर प्लेन मिरर. केवे भी भूलिबो नहीं when you are representing a mirror you have to shaded region तुमको मेंशन करने पड़ेगा, otherwise मार्क कर दियो. This is mandatory because it indicates that which part of the reflective, which part of the material is act like as a reflecting surface and which part of the material or the substance is act like as a non-reflecting surface. For example, this is a plane mirror and this is a concave mirror and this is a convex mirror. This is a convex mirror. This is a convex mirror. Till now, ये concave convex से पहले तो क्या है ना, ये पहले तुम तो shaded region तक mention करना. So you have to mention first. This is your shaded region. Then this AB, for example, AB, it will act like as a convex mirror. In that case, this is a concave mirror, same AB, and this is a plane mirror. This is a plane mirror. This is your principal axis. This is your principal axis. This is your principal axis. I have already told you that it is pole, it is pole, it is pole. ठीक है ना? ठीक है. तो देखो ये principal axis रो first come to the object. Object कौन रखा है? principal axis रो ऊपर object को रखा हुआ है ना कौन रखा हुआ है? ऊपर रखा हुआ है ना कौन रखा हुआ है? ऊपर रखा हुआ है. Already we are representing, already we are placing the object above the principal axis. That's why always mind one thing. H1 by height of the object is always positive. Always positive. ठीक है ना? Then H2, question H2. Sign कौन H2 का sign कौन height of the image. As a height of the image, it depends upon nature of the image. Image को deformation होती. Plane mirror रे, the plane mirror होती है, plane mirror सामने रखी है तो image शॉर्ट में erect पढ़ाई थी, erect, inverted, lateral, inverted सब केस में पढ़ाई थी. तो मिरर सब का कौन है, मिरर जो इमेज का फॉर्मेशन है इमेज का कौन है ठीक वो सामने आता है, इरेक्ट है. तो दैट मींस प्लेन मिरर केस में H1 is positive and H2 is positive. Both H1 H2 both positive. H1 represent height of the object and H2 represent height of the image. HI and HO confusion हवा है. एडोट टेबल भी कर दो. confusion हवा है. एडोट टेबल कर दो. फॉर एग्जांपल ये देखा दोस्तों विजिबल होची ठीक है. फॉर एग्जांपल फोकल लेंथ रो साइन कोन हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर साइन कोन हो, देन फोकल लेंथ बा रेडियस ऑफ कर्वेचर दिटा साइन कोन हो, देन नेक्स्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. दिस इज very important. न्यूमेरिकल एक्सरसाइज बोथ CBSE and ICSE. ICSE and ICSE CBSE का 10th class है. फर्स्ट प्लेन मिरर, then next come to the concave, then next come to convex. Convex. तो फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ. प्लेन मिरर रो फोकल लेंथ अछि कि नो सर नहीं. कौन पे नहीं? कारण इट इज a straight mirror.
और किसी कर्व लाइन है जब कर्व लाइन ही नहीं तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कोड आसी बिकॉज़ रेडियस ऑफ कर्वेचर व्हाट कर्वेचर इज कम फ्रॉम गोटे कर्व लाइन गोटे कर्व मिरर कर्व रिफ्लेक्टिव सरफेस थी तो प्लेन मिरर रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं स्टिल यार फोकल लेंथ कौन निया है नेगेटिव बिकॉज़ लेफ्ट साइड फोकस कोड फॉर्मेशन लेफ्ट साइड इनफाइनाइट फॉर्मेशन हो पढ़ाई थी तो दैट्स व्हाई फोकल लेंथ कौन निया है नेगेटिव the next one to the concave when incident ray or light rays coming from infinite parallel to principal axis after reflection they meet at one point is called that point is called as focus that is focus and focal point of concave mirror definition करते so always focus is from left side to the concave mirror or pole left side to the pole of concave mirror always focal length left side focus could formation हुए concave mirror left side that's why and focal length the distance between focal length or focus to pole the distance between focus to pole is called as focal length as focus is always situated left side to the pole of the concave mirror that's why focal length of concave mirror is always negative in case of concave mirror then here represent concave mirror always negative then what about focus convex mirror what about focus both radius of curvature and focal length when light rays or incident rays coming from infinite parallel to principal axis strike with or after reflection with convex mirror appears to meet at one point that point appears to not actually appears to say appear kare the light ray ase after reflection this is your incident ray after reflection eta converge hobe diverge hoibo it act like that backward formation kale mirror ro पछपट formation hobo से एक्चुअली फॉर्मेशन होनी हमको लागू ची पछाड़ फॉर्मेशन होची बट एक्चुअली नॉट फॉर्म्स दैट्स व्हाई द फोकल लेंथ कोन होबो आज फोकस इज सिचुएटेड राइट साइड टू द पोल तारे फोकल लेंथ कोन होबो पॉजिटिव बोथ रेडियस ऑफ कर्वेचर कोन होबो पॉजिटिव दैट मींस कन्वेक्स मिरर कोन होबो पॉजिटिव ओवर देन व्हाट अबाउट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u is always negative in both three cases क्वेश्चन कोन पे always we are placing object left to the mirror तो सर राइट रखले कोन होबो किछि था किछि टैलेंटेड स्टूडेंट टैलेंटेड पिला था ओवर क्वेश्चन कोन सर राइट रखले होबो कोन तो माइंड डाउट আছে किछि भी होबो सब साइन चेंज हे जिवो रिजल्ट जहा आसी आता से ही आसीबो रिजल्ट फाइनल रिजल्ट हम जहा देखिबा मैग्निफिकेशन कोन आसीबो हले कि ता फोकल किछि रिजल्ट चेंज होबो तो मिरर उल्टे दबो सब साइन चेंज हेइबो when you will do numerical expression हला ठीक अछि देन कम टू द object distance object is always placed left side to the mirror always somewhere left side में present है somewhere in three cases whatever it may be plane mirror it may be concave mirror it may be convex mirror always object should be present left to the mirror that's why object distance that means u is always negative in three cases both plane mirror concave mirror and convex mirror then next come to the image distance v is depends upon the nature of the image where image is formed. For example, in case of plane mirror, V is always positive because why positive? Because mirror जेतरे मु मुह देखुची mirror रे मु मुह देखुची mirror रो पछ पटे लागुची मते image formation होउची mirror एपट रे नाही कोन फील करूची मु ए जेति पछु जिबी मो इमेज टा भी से mirror भीतर से ठीक पछु जाउची that means always image form right side to the or back side of the mirror तान right side formation रे कोन हो positive तान plane mirror image distance कोन हो positive right hand here positive. Then next one the concave mirror. Concave mirror रे image कोड फॉर्मेशन होतला 6 cases 6 टा केस में पढ़ाई थिले मु when objects getting closer to mirror image will be further to the mirror जत्ते ऑब्जेक्ट तो पाखो होतला 6 टा केसेस ही पढ़ाई थिले मु इमेज सेते दूर आस्तला दैट मींस कोन होतला एठी image distance negative होतला किंतु 6 नंबर केस रे when object is placed between focus and pole virtual image formation होतला स्टार मार्क करी मु पढ़ाई थिली दिस इज very important virtual image formation होतला image is virtual and erect back side of the mirror that means it depends upon the position of the object so in case of concave mirror the v image distance may be negative may be positive very important may be negative may be positive it depends upon the position of the object if the object position is between focus and pole then must the image distance will be positive because in that case image will be formed right side to the or back side of the concave mirror or right side to the pole of the concave mirror
then next comes to the convex mirror. Convex mirror रे ଆମେ दुईटा केस पढी दिले, when object at infinite and when object between infinite and pole of the mirror. In both the cases image formation होइतिला right side to the mirror, mirror ର back side ର formation, mirror ର भितर हैला inside the mirror, that is virtual image, that's why always positive. Then similarly next comes to the height of the image, height of the image, height of, sorry, it is first height of the object, then ये होची height of the image, height of the object गोटे बुक रे लिखा है, मु भी तो मैक्स में लिखे h1, height of the h1 वन टा फर्स्ट होची, टू टा सेकंड होची, बिना ऑब्जेक्ट रे इमेज फॉर्मेशन हो परियो कि बिना ऑब्जेक्ट रे. अच्छा ये जीवन रावण फिल्म देखिबो, इधर गोटे डायलॉग थिला जेता रावण सिलेक्ट करिया पे देखिबो, जेता जीवन पाखे मल्टीपल ऑप्शन, देयर इज सेवरल मल्टीपल ऑप्शंस, रावण डिफरेंट बहुत सारा रावण किया आइले, जीवन को कोन कहला ना हमर सर्वेंट को ताकू हमर कोन था ना लूसीफर, तो ताकू कहले जे गोटे मारिया पे से कंफ्यूजन थिला, जेता पर गोटे ने तीटा गुली थिला बदाई थी, से कंफ्यूजन थिला जे इते जन भीतर मल्टीपल इमेज अछि, ताकू रावण की जेता लूसीफर गोटे आईडिया देथिला जे जार छाई अछि शैडो अछि से रावण, कारण से ही रियल रावण आइसोलेशन फेक तार माने होलोग्राम रे 3D ये अछि. तो एग्जैक्टली विदाउट ऑब्जेक्ट तो इमेज फॉर्म कर परिबो नै, तो एग्जैक्टली ए वन टा फर्स्ट अछि तार ऑब्जेक्ट फर्स्ट आसीबो, ता पर इमेज हैला, इमेज थिबो ऑब्जेक्ट नथिबो दैट इम्पॉसिबल, इन भाइस वर्सा कैन बी पॉसिबल. एग्जांपल अछि बडे महार फिजिक्स, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव इन थ्री केसेस, बिकॉज़ ऑब्जेक्ट को सबले में प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर रखिबो. फॉर एग्जांपल दिस इज ए डस्टर, इफ I want to place this duster, I have to place this duster above the principal axis, always in three cases. It may be plane mirror, it may be convex mirror, it may be concave mirror. तो object height कौन होगा always positive. then next to image height कौन होगा, image height कौन होगा depends upon the position of the object. For example एटी थला object ठीक अछि, plane mirror केसे सब जाक ऊपर फॉर्मेशन होगा erect, that means plane mirror रे positive. then next to concave mirror रे image रे distance कौन होगा, सब केस रे तळे inverted formation होतला, inverted formation होतला, गोटे केस रे virtual back side of the same exceptional case पढे very important, that means it may be positive, it may be negative. ठीक है ना. then next comes the convex mirror always erect formation होता है, दी ढाई केस थिला, magnified highly magnified दी ढाई केस थिला, that means always positive. this is all about Cartesian plane, focal length, I repeat last time I repeat कर दूची, plane mirror, concave mirror, convex mirror, focal length, radius of curvature, mainly focus focal length consider करके, radius of curvature तो नहीं, negative positive, object distance always negative. concave mirror variation case होची, आर concave mirror इधर very important case, इधर अधिक परसेंट लेवल, ठीक है ना. this is all about Cartesian plane, just watch the video.